Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is what is government? Learning topics, meaning and need for government, functions of government, organs of government, forms of government, levels of the government. Meaning and need for government. In ancient times, when human beings lived as hunter-gatherers, life was simple. However, as people learned to cultivate and settlements expanded, their needs and requirements increased. Life became more complicated and the need for an organized system arose. A leader or an authority was required to make laws for the peoples to follow goals. Earlier, we always had kings as leaders. Today, all over the world, we have different types of government which govern a country. तो पुराने टाइम से क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हो चुकी है, सेटलमेंट आ चुके हैं, तो अब अलग अलग गवर्नमेंट्स की अलग अलग लेवल्स पे जरूरत होती है ताकि वो रूल्स बनाएं और हम उनको फॉलो करें. The government is either a person or a group of people who are responsible for controlling and managing the affairs of a country or state. Every country needs some forms of government for society to function smoothly. It provides the citizens a framework within which they can work to achieve their common purposes. A government is also vital to represent the needs of the people and to take care of their problems. The absence of a government can lead to chaos, confusion and disorder in the country. तो एक कंट्री अगर आप चाहते हैं कम्युनिटी या कंट्री अच्छे से स्मूथली फंक्शन करे तो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्शंस में रिक्वायरमेंट होती है. अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगा आपकी कंट्री में तो बहुत ज्यादा हैवॉक और chaos की सिचुएशन अराइज हो जाएगी. Quick facts. Roughly 1 in 5, 22% of the world's nations have an official state religion and a similar share, 20% have a preferred or favored faith tradition. तो approximately 22% ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे अपना ही रिलीजन है. ऑन द अदर हैंड बाकी की 20% ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे आप अपना रिलीजन या ट्रेडिशन खुद चूज कर सकते हैं. Functions of government. The government of a country performs a number of functions. These are, number 1, it builds the infrastructure of the country by constructing roads, producing and providing electricity, clean drinking water, etc. Number 2, it also looks after the welfare of the people by taking up projects for eradicating diseases, providing health services, education, etc. Number 3, it governs the country according to the laws of the land. It frames laws also. Number 4, it maintains the law and order and punishes those who do not abide by the law. Number 5, it protects the boundaries of the country and maintains peaceful relations with other countries. तो एक जो गवर्नमेंट होती है उसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. उसको अपनी स्टेट के लिए काम भी करना होता है, रोड की कंस्ट्रक्शंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं. अलग अलग लॉज की फॉर्मेशन होती है ताकि क्राइम्स कम हो और तो और दो नेशंस के बीच में भी कैसे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन रहें उसके बारे में भी अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट ही बनाती हैं. Number 6, it provides relief and aid to the people affected by natural disasters such as floods, earthquakes, etc. जहाँ पे कहीं पे आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ही अलग अलग एमिनिटीज भेजती है उनको रिलीफ करने. Organs of government. The government has 3 organs. A. Executive, B. Legislature, C. Judiciary. Since the main function of the government is to maintain law and order, laws have to be made. These laws are made by the legislature. The legislature introduces and passes laws. The executive ensures that these laws are obeyed. The judiciary makes sure that these laws are not misinterpreted either by the legislature or by the executive. The judiciary provides justice to the people. तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसकी 3 मेन ऑर्गन्स हैं, हिस्से हैं. एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी. लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेचर काम आता है. जो लेजिस्लेचर होता है सारी लॉज का फॉर्मुलेशन करता है, पास करता है. एग्जीक्यूटिव ये मेक श्योर करता है कि ये सारे जो लॉज अब फील्ड पर डाले जा रहे हैं तो वो फॉलो भी करे जा रहे हैं. जुडिशरी जो होता है वो इट कीप्स एन आई ऑन बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कि वो किसी भी लॉ को मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं. लोगों को जस्टिस, न्याय दिलाने में जुडिशरी मदद करता है. In democratic countries like India, United States of America, United Kingdom, etc., people play an active role in the functioning of the government. People decide who will govern over them. In many countries, they had to fought for. Women did not have the right to vote in many countries till the 20th century. The suffragette movement of the early 20th century was associated with a demand by women seeking the right to vote. Today, all modern democratic states have adopted universal adult franchise, that is, the right to citizens above the age of 18 to vote. तो पहले के टाइम पे यहाँ तक कि 20th सेंचुरी तक भी कहीं ऐसी जगह थी, डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे जहाँ पे औरतों को वोट देने नहीं दिया जाता था. लोगों ने प्रोटेस्ट किया, औरतों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद आखिरी में सारे डेमोक्रेटिक स्टेट्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया गया जिसके तहत जितने भी सिटीजन्स हैं उस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के 18 साल या उससे ऊपर के हैं वो वोट दे सकते हैं. Quick facts. India has largest democracy.
It draw its inspiration from Britain, which is considered as the sixth mother of all डेमोक्रेसीज। तो हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है और इसने अपनी इंस्पिरेशन ली है ब्रिटिश डेमोक्रेसी। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, there are different types of government: monarchical, dictatorial and democratic. In present prevailing political scenario, democracy and monarchical form of government are most commonly found. आपकी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट सिस्टम्स होती है, monarchical, dictatorial, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट है आज के टाइम में वो है डेमोक्रेसी और monarchical। Number 1, monarchy. In a monarchy, all the powers rests with the king. The king or queen is the head of the government and has the power to take all the important decisions. When a monarch king dies, the power automatically passes to the next monarch. Monarchy यानी कि उस particular state में एक ही राजा होगा, एक ही king होगा जो सबके लिए रूल या लॉ बनाता है। वो मर जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट होगा उसी फैमिली का वो किंग बन जाता है। Number 2, dictatorship. When one person heads the government and rules on the basis of his own wish without paying attention to the wishes of the people, it is called an authoritarian government or dictatorship. It is an undesirable form of government where people have to face many hardship due to the whims of the dictators. Adolf Hitler of Germany was one of the most infamous dictators in history. डिक्टेटरशिप यानी कि कोई एक ऐसा रूल में होता है जो अपने आप को सुपीरियर मानता है और बिना इंसानियत के बेसिस पे कोई भी रूल एब्रप्टली बना देता है। जर्मनी में ऐसे एक एडोल्फ हिटलर थे जिन्होंने डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था और वो सबसे ज्यादा इनफेमस थे, बिल्कुल बेइज्जत थे इस चीज के लिए। नंबर 3, डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज रन बाय द representatives of the people. Citizens have the right to vote and thereby choose their representatives. They also have the right to contest the elections. Moreover, the government is answerable to the people for its actions. If it does not fulfill the expectations of the people, it can be voted out of power the next time elections are held. तीसरा है डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में भी प्रैक्टिस करा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट करे जाते हैं। अगर वो अपने कार्यकाल में अच्छे से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको उस पदवी से नीचे उतार दिया जाएगा। Democratic governments can be of two types: A, parliamentary, B, presidential. The difference between the two is based upon the relationship with three organs of government. तो आपकी जो डेमोक्रेसी होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल और दूसरी होती है पार्लियामेंट्री। Parliamentary form of government. Number 1, the Prime Minister is the real head of the government. Number 2, the Prime Minister is the leader of the majority party in the Parliament and appoints ministers to form the Council of Ministers. Thus, there is close coordination between the legislature and the executive. Number 3, the government, which is directly elected by the people, stays in power for its full term as long as it has the support of the majority. Example, India. तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इट इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, वो मेन हेड होता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, साथ में मिलकर ये पॉलिसी और लॉज का फॉर्मेशन करते हैं और जो पूरा इनका कार्यकाल जिसके लिए इनको इलेक्ट करा जाता है, जब तक इनके पास मेजॉरिटी होती है ये रूल करते रहते हैं। इन द केस ऑफ इंडिया। Quick facts. Democracy is derived from the Greek word demos, which means people, and kratos, which means rules. तो आपके जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड से आता है, डीमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटोस का मतलब होता है रूल। Presidential form of government. Number 1, in it, the president is the real head. Number 2, he is elected directly by the people. Number 3, since the president is elected directly by the people, he or she is not responsible to the legislature. Number 4, the president is not necessarily from the party that wins a majority in the parliament. Example, United States of America, USA. Presidential form of government में president main head होता है, directly elect करा जाता है और ज़रूरी नहीं है कि जो majority party है ये उसी का कोई member हो। Levels of the government. The government in our country works at 3 different levels. Number 1, the lowest level is the local government in a village or a town. Number 2, the government at the state level is called the state government. Number 3, at the national level is the central government. तो हमारी कंट्री में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। एक लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस या टाउन में होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है जो पर्टिकुलर स्टेट को संभालती है और एकदम मेन सेंटर में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। Government at these 3 levels caters to different kinds of people and takes different kinds of decisions. The local government in village or city deals with local problems faced by people. At state level, the government deals with matters which are of importance to the entire state, example, education. The central government generally deals with the issues of national importance such as national security, terrorism, etc.
तो तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ये अपने अपने लोकेटेड एरियाज में उन्हीं लोगों के लिए काम करती है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो विलेजेस के लिए करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट में जो सबके लिए जरूरी होता है जैसे कि एजुकेशन, उसके लिए पॉलिसी की फॉर्मेशन करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, नेशनल सिक्योरिटी होती है, उसकी तरफ काम करती है। Recap. The term government means a system by which people are governed. The important functions of the government are to make laws, enforce them, and look after the welfare of the people. Government has three organs: executive, legislature, and judiciary. In democracy, there is active participation by the people in the government. People decide who will govern them. Forms of the government are monarchy, dictatorship and democracy. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, 3 अलग अलग लेवल पे इंडिया की गवर्नमेंट काम करती है, अलग अलग तरीके से वेलफेयर करती है, और उसके अलावा 3 टाइप की आपने अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट देखी, मोनार्कियल, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।